Hello everyone. Today we will try to understand two new words, that is ubiquitous and omnipresent. The spelling of ubiquitous is Ubiquitous. The second one is omnipresent, that is Omnipresent. Okay. So what is the difference between this? We will learn by short story. The story is the invisible difference. One morning, Arab walked through a bustling city. जो एक मॉर्निंग थी उसमें आरव वॉकड थ्रू अ बसलिंग सिटी, मतलब एक बसलिंग मतलब शोरगुल वाली सिटी से वो गुजर रहा था. ओके, गुजरा. स्मार्टफोन्स वर यूबिक्विटस, पीपल वर यूजिंग दैम ऑन बसेस. स्मार्टफोन्स जो है वो एवरीवेयर थे. यूबिक्विटस मीन्स एवरीवेयर. पीपल वर यूजिंग दैम ऑन बसेस, उनको बसेस में यूज़ कर रहे थे, इन कैफ़ेज़, पार्क्स एंड इवन वाइल क्रॉसिंग द स्ट्रीट. ओके, बसेस में, कैफ़े में, पार्क्स में, और जब वो स्ट्रीट क्रॉस कर रहे थे तब भी वो उसको यूज़ कर रहे थे. डिजिटल स्क्रीन्स हैड बिकम अ यूबिक्विटस फीचर ऑफ एवरीडे लाइफ. ओके, ये जो डिजिटल स्क्रीन्स है वो क्या बन गई है? एक यूबिक्विटस फीचर बन गई है, हर जगह मौजूद एक ऐसी चीज़ बन गई है जो हमारी लाइफ में हमेशा काम आता है. ओके, लेटर दैट इवनिंग अ पावरफुल स्टॉर्म हिट द सिटी. उसी इवनिंग में थोड़ा लेट अ पावरफुल स्टॉर्म हिट द सिटी. एक बहुत तेज़ तूफान आया उस सिटी में. द इलेक्ट्रिसिटी वेंट आउट. इलेक्ट्रिसिटी चली गई, मतलब लाइट्स वगैरह ऑफ हो गई. ओके, एंड साइलेंस फिल्ड द स्ट्रीट्स. और पूरी स्ट्रीट में क्या हो गया? सभी स्ट्रीट्स में साइलेंस हो गया. ऑल्दो नो वन स्पोक अबाउट इट, हालांकि कोई नहीं बोला उसके बारे में. अ फीलिंग ऑफ फियर वॉज ऑमनी प्रेजेंट. डर का एक जो फीलिंग थी, डर की फीलिंग थी, वो ऑमनी प्रेजेंट थी, वो चारों तरफ थी, एवरीवेयर थी. सी, यूबिक्विटस मीन्स भी एवरीवेयर, ऑमनी प्रेजेंट मीन्स भी एवरीवेयर. बट नाउ आई विल क्लियर यू आउट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू. इट लिंगर्ड इन एवरी होम. वो सब घरों में फैल गई. एवरी कॉन्वर्जेशन, सबकी बातों में. एंड एवरी वरीड ग्लैंस, और हर एक की चिंतित नज़रों, मतलब हर एक इंसान टेंशन में हो गया था तो उनकी नज़रों में सब में क्या था? फीलिंग ऑफ फियर. क्या था? डर था. ठीक है. द नेक्स्ट मॉर्निंग आरव रिफ्लेक्टेड ऑन द डे. नेक्स्ट मॉर्निंग आरव रिफ्लेक्टेड ऑन द डे. आरव ने रिफ्लेक्ट किया, सोचा, समझा, है ना. ही रियलाइज्ड दैट स्मार्टफोन्स वर यूबिक्विटस बिकॉज दे वर फिजिकली एवरीवेयर. उसने क्या रियलाइज़ किया? कि स्मार्टफोन्स जो है यूबिक्विटस है बिकॉज दे आर फिजिकली अवेलेबल एवरीवेयर. ओके, दे आर फिजिकली एवरीवेयर, मतलब वो फिजिकली है हर जगह पर. बट फियर वॉज ऑमनी प्रेजेंट बिकॉज इट वॉज एन इनविजिबल इमोशन दैट सीम्ड टू सराउंड एवरी वन. ओके, लेकिन जो फियर होता है वो भी एवरीवेयर होता है, बट दैट इज़ इनविजिबल इमोशन. ओके, सो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दिस टू? Ubiquitous means everywhere, omnipresent means also everywhere. But the thing is, ubiquitous is physically common and seen everywhere. Okay, जो physically होता है और सभी जगह होता है, just like mobiles, okay, like houses, okay, buildings. In big cities there are buildings, so these all are ubiquitous. Okay, we can see everywhere physically. But if we talk about emotions, like just like fear, feeling of fear, okay, any kind of emotion, that is omnipresent, that is also present everywhere. But if we are talking about emotions, feelings, ideas, okay, in divine qualities, means God and goddesses and this kind of souls, these kind of things, okay, which is related to philosophical part, so that is omnipresent, that is not ubiquitous. So whenever people learn or we learn, we are confused with ubiquitous is also everywhere, omnipresent is also everywhere. So what is the difference between these two? Physically present everywhere, that is ubiquitous, and invisible and all encompassing presence often used for feelings, ideas or divine qualities, that is omnipresent. Okay, so here are some questions. You can see here Wi-Fi has become ubiquitous or omnipresent? What? Ubiquitous. Why? Because this is physically present everywhere. Okay, this is not emotion. Okay, we are using this, so this is like kind of device. We just place
then we use this. Okay, during the pandemic, uncertainty means anishchita, means people were like uncertain, like who will remain, who will be alive, and who will be died. Okay, कौन जिएगा कौन मरेगा, there was no certainty. Okay, everything was uncertain, अनिश्चितता, like क्या होने वाला है क्या नहीं. So this is again feeling, that's why we are using omnipresent. Okay, cafe shops, see, coffee shops, cafe shop और coffee shops. Coffee shops क्या होंगी, physically present, so this is ubiquitous. In many religions God is believed to be, कि ये माना जाता है कि गॉड क्या है, omnipresent होगा, ubiquitous. गॉड क्या है, डिवाइन पावर है. ओके, दिस इज़ नॉट फिजिकली प्रेजेंट, दिस इज़ इमोशन, समवेयर दिस इज़ इमोशन. ओके, and this is a divine power, so that's why we are saying omnipresent. Next, social media. Social media is, what about social media? Social media we are using physically, this one. Okay, this is not our emotion, so this is ubiquitous. Okay, but God is omnipresent. The fear of failure, again we are talking about fear of failure, मतलब फेल हो जाने का जो डर है before the final exam, that is omnipresent. Okay, because we are talking about the emotions. Electric vehicles are becoming increasingly. Okay, so again we are talking about electric vehicles, we are talking about physical part, not emotion, so that's why this is ubiquitous. Okay, the last one is the smell of fresh bread. See, we can't touch and we can't see the smell. Okay, so this smell is ubiquitous, wrong, omnipresent. What would be there? Omnipresent. Okay, because this is an emotion or feeling, we can say, we can smell, we can't physically see that. So whenever you are talking about physically, you something is available physically and you can see, okay, that is ubiquitous. And something which is invisible or something which is related to feeling, ideas, emotions or divine qualities, that time we can use omnipresent. I hope now everyone is clear about this, and I hope you like my videos. If you want any word which you are confused with, so you can send me as a comment section. Okay, thank you.